Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the phylum Annelida. Let's start. Phylum Annelida, which are also known as the segmented worms. So basically, the word, the segmented worms or annelids, it is derived from a Latin, it's a Latin word that is annulus, which means little ring. Okay, little ring. और इसी वजह से फिर इनको लिटिल रिंग्स की बिहाफ के ऊपर सेगमेंटेशन की बिहाफ के ऊपर इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है एंड दिस इंक्लूड the worms to which we are most familiar. सबसे ज़्यादा फेमिलियर जो वर्म्स हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम Annelida और द सेगमेंटेड वर्म्स. Dear students, the body is metamerically segmented. There is metameric segmentation. ये उनसे भी कुछ एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं. फ्रॉम द राउंड वर्म्स, फ्रॉम द नेमाटोड्स, ये कुछ बेहतर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज देयर. मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये है दैट दे हैव द सेगमेंट्स containing structures in common. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि जो कॉमन हैं हर सेगमेंट के अंदर. दैट इज गट, ब्लड वेसल्स एंड the nerve cord. They are persistent through the length. Are persistent throughout, via means throughout the length of the segmented worm. और अगर हम जनरल इसके इसके हवाले से बात करें सेगमेंटेड वर्म के हवाले से तो याद रखेंगे दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सीलोमेट्स. यहाँ से सीलोमेट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. इससे ऑनवर्ड जब सब आगे सारे क्या सीलोमेट्स है. ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स. सीलोमेट्स मतलब देयर बॉडी कैविटी इज मेड अप ऑफ सीलोम, द ट्रू बॉडी कैविटी. और the coelom is formed by splitting of mesoderm. तो mesoderm के स्प्लिट होने से वो दरमियान में स्पेस बन जाती है, कैविटी बन जाती है. दैट इज कॉल्ड द coelom. इसमें जो विजरल है, द विजरल लेयर, क्योंकि दो लेयर्स हैं, द विजरल लेयर कवर्स द गट और द एलिमेंट्री कैनाल एंड पेराइटल लेयर टू द बॉडी वॉल, उसके साथ अटैच्ड. ठीक, तो ये याद रखने. और चलिए अब इनके कुछ सिस्टम्स के हवाले से बात कर लेते हैं. So the first thing is the digestive system. Digestive system
It has two openings, anterior mouth and posterior anus, and the mouth is overhung by lobed structure called, जी डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, प्रोस्टोमियम. प्रो मीन्स बिफोर, स्टोमिया मीन्स ओपनिंग, यानी मुंह से पहले, माउथ से पहले एक ओपनिंग मौजूद है, दैट इज वो लोब स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं, जिसके साथ माउथ अटैच होता है. अब इनके थोड़ी सी सेगमेंटेशन के हवाले से भी बात हो जाए. सो द सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल भी है. एक्सटर्नल इज बाय कंस्ट्रिक्शंस, तो बाहर से बॉडी कंस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि अर्थवर्म, तो बाहर ये कंस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं. और इंटरनली देयर आर सेप्टा. ठीक है, इंटरनल क्या मौजूद है, सेप्टा. सो दीज आर द कंस्ट्रिक्शंस जो कि रिंग बना रही हैं एक्सटर्नली, और ये अंदर वाली साइड पे क्या मौजूद हैं, दिस इज द सेप्टम. एंड इंटरनली by septa, the plural of the septum. Or now let's talk about their the excretory system. So excretory system, they have got paired nephridia, आपको याद है, जिसको हमने कहा था मेटानेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम, सेकेंड ईयर में पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 15 में. ठीक है, द पेयर्ड नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर, हर सेगमेंट में मौजूद हैं. इन ईच सेगमेंट विद ciliated internal opening, that is called nephrostome और nephridiostome. तो ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है excretory. And if we talk about the respiratory system, so that is absent still, that is absent. So gaseous exchange हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी. ठीक है, the gaseous exchange occurs via body surface, और उसकी स्किन के अंदर आपको पता है मौजूद हैं ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस को सेक्रेट कर रहे होते हैं और एक्सुडेशन हो रही होती है टू कीप द रेस्पिरेटरी सरफेस moist. Now talk about their the cardiovascular system. So they have got 4 to 5 pairs, like in the earthworm, 4 to 5 pairs of lateral hearts and closed circulatory system. ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें closed circulatory system आ रहा है. Closed circulatory
सिस्टम का मतलब they have got blood vessels. The blood runs in the blood vessels. और कौन कौन सी blood vessels हैं यहाँ पर? The dorsal, ventral and subneural and the commissural प्लस कैपिलरीज. ठीक है. सो ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं. डिटेल से डिस्कस हो चुका है फर्स्ट ईयर के अंदर भी. एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर nervous system, so they have got well developed nervous system. They have got central nervous system with two solid longitudinally double, जिसको हम कहते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. ठीक है. वेंट्रल से यहाँ पर दो जा रही हैं, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. सो दैट इज द नर्वस सिस्टम. और फिर which give rise to nerves at segment level. हर segment में फिर वो मुख्तलिफ nerves वहाँ से rise कर रहती हैं at segment level. Now if we talk about their habitat, so various habitat is there. They have got, they are marine, they are freshwater living, as well as they are found in the damp soil or damp places. So marine, it includes nereis, freshwater, example is styleria, damp soil like the earthworm. Clear? So various habitats they have got. And now let's talk about their reproductive system. So the most common method is mostly reproduce by sexual reproduction. और इसमें कुछ जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं, कुछ जो हैं वो सेपरेट सेक्सेस पे मौजूद हैं. हर्माफ्रोडाइट कौन से हैं और सेपरेट सेक्सेस. हर्माफ्रोडाइट में एग्जांपल याद रखनी है, द अर्थवर्म, and the leech, while the separate sexes they have got the nereis. Okay, उनके separate sexes हैं. And there is also the formation of free swimming trochophore larva is also formed. ठीक है, trochophore free swimming जो larva इनके अंदर बनता है. Now let's talk about their skeleton. So skeleton की बात करेंगे तो they have got hydrostatic skeleton, hydrostatic skeleton जो कि किस तरह से होगा, that is their coelom have coelomic fluid जो कि
हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करेगा. And let's talk about their muscular system. The muscles, so they have got two kinds of muscles. But remember, these are the smooth muscles. Okay? The non-stripped muscles, involuntary muscles. So the muscles they have possessed the longitudinal, they have longitudinal muscles as well as they have got the circular muscles. तो ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें ये दोनों तरह के मसल्स मौजूद हैं. फ्लैट उसमें जो राउंड फॉर्म्स थे उनमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे. ठीक है. When the longitudinal muscles contract, the body shortens, की बॉडी शॉर्ट होती है. And when the circular muscles contract, the body is elongated. Clear? And let's talk about the sensory organs. So they have got the papilla and they have also got locomotory organs in the form of chyte or CT or they have got the parapodia. Clear? तो ये मुख्तलिफ तरह के तरीक़ों से लोकोमोट करते हैं. The chitinous chyte, like they are present in the certain their worms, like the CT, they are present in the earthworm. Parapodia, they are present in the like the Nereis, etc. So इसमें अभी इसकी डिटेल को भी देख लेते हैं. One more thing related to the phylum Annelida is that is the earthworm. So earthworm being most active worm in burrowing activity is called the natural प्लफ. इसको नेचुरल प्लफ भी कहा जाता है क्योंकि ये बर्रोइंग एक्टिविटी से जब ज़मीन के अंदर जाता है तो मिट्टी को नरम करता है और रूट्स जो होती हैं उनके अंदर जा कर के उसको एयर जो है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. न्यूट्रिएंट्स को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये चबा चबा के ऊपर जो खाली मिट्टी होती है उसको बाहर फेंक रहा होता है. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द नेचुरल प्लफ. एमसीक्यूज़ के लिए इसको मार्क कर लीजिए. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लासेस, फाइलम से की छोटी उसे जो छोटी जो कैटेगरी होती है, जो टैक्सॉन होता है, दैट इज़ द क्लास. सो इट हैज़ गॉट 3 क्लासेस. क्लासेस ऑफ Phylum Annelida. So it has got 3 classes. Number 1 is class Polychaetia. Class Polychaetia. So these are the worms, segmented worms, which have got distinct head region मौजूद है, with eyes, आंखें भी मौजूद हैं, and structures. इसकी टोटल डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की थी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में. कॉल्ड palps and tentacles, जो इसके ऊपर वाले डॉर्सल सरफेस पे मौजूद होते हैं. Palps and tentacles. And
there is the development of trochophore larva, clear, during their embryological stages, during their larval stages. And another important feature, organ of locomotion are parapodia, and mostly aquatic, and marine. Aquatic में कौन सा ज़्यादा है? Marine है. And its examples are Nereis and Chaetopterus. ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने याद रखनी है. So it is the class Polychaetia. Now the second class is class. Achha, one more thing related to this. Their sexes are separate. Here, as we have discussed in the previous slide. So now the class Oligochaetia. So that is the second class of this phylum Annelida. So Oligochaetia, they have no distinct head region. They are usually hermaphrodite. And they are aquatic as well as they live in the soil, मतलब कि terrestrial, and organs of locomotion are CT, clear, and its examples are lumbricus, terrestris, and Pharytima posthuma. Both of these are the earthworms. That is the red one, and this is the dark one, and the other earthworms. Now, the third class is class Hirudu or class Hirudinia, which includes the Medicinalis Hirudu, that is leech. So they also possess no distinct head and no organs of locomotion इनके पास नहीं है. So how do they move? They move by contraction of muscles and the suckers. Clear?
They have chitinous jaws to puncture the skin of host, release anticoagulant, and secrete anticoagulant. जहाँ पर ज़ख़म करना है वहाँ पर भी एंटीकोगुलेंट ताकि स्मूथ फ्लो हो सके, और फिर उसके बाद जब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा सेक्रेट एंटीकोगुलेंट इन गट टू बी स्टोर्ड long time. For example, Hirudo medicinalis, which is known as the leech. Clear? And another characteristic is there. One more important character is there. They have got their segments have additional rings called annuli, and the number of segments are fixed. Usually, like in the leech, there are 33 to 34 segments which are fixed among them.